ओम शांति। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार है फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? त्रिसृष्ट जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। तर या विश्वाला हिऱ्यासारखं बनवणारा बाबा, या सगळ्या प्रकृतीला, निसर्गाला, पाच तत्वांना पुन्हा हिऱ्यासारखं सर्वोच्च लेवलला पोहोचवणारा बाबा, जो इस दुनिया को संपूर्ण रीति से बदलने वाला बाबा है, वो अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाता है। सगळ्या विश्वातल्या सगळ्या आत्म्यांना तो हिऱ्यासारखं नाही बनवू शकत, बनवत नाही, प्रत्येकाचा अपना अपना पार्ट है। लेकिन हम ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे हैं, हमें ईश्वर हीरे जैसा बना रहा है। हीरा सर्वोच्च असतो, त्याची जे महत्व आहे ते सगळ्यात जास्त आहे, त्याची जी किंमत आहे ती सगळ्यात जास्त आहे। आणि म्हणून बाबा म्हणतात की तुम मेरे डायमंड बच्चे हो। डायमंड तर आपल्याला बाबा त्याच रूपामध्ये बघतो कि मेरे हीरे हैं, हीरे समान बच्चे हैं, हीरे जैसे बच्चे हैं, चमकदार है, सबको आकर्षित करने वाले हैं और सभी को ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न करने वाली मेरी ये बहुत श्रेष्ठ और महान आत्मा है। तो बाबा म्हणतात मी त्या नजरेने तुम्हाला बघतोय। जो जो बाबा के बच्चे, जिनको जिनको बाबा देखता है, शरीर को नहीं देखता है, आत्मा को देखता है। और आत्मा को बाबा आज किस रूप में देख रहा है? हीरे जैसे हम चमक रहे हैं, इस रूप में बाबा हमें देख रहा है। तो हमें भी बाबा म्हणता है आप भी ऐसे ही सबको हीरे जैसा चमकता हुआ देखो। बाबा म्हणता है वो तो लपलेला असतो म्हणून तुम्हाला शरीर दिसतं का? शरीर तर निमित्त मात्र आहे, पण आपण आत्मा ओरिजिनल मध्ये भ्रुकुटीच्या मध्ये विराजमान आहे। आणि कोणताही शरीरधारी आहे ती पण आत्मा आहे, आणि ती आत्मा पण शरीराच्या मध्ये शरीरामुळे झाकली गेलेली आहे, पण ओरिजिनल तर ती आत्मा आहे। मग त्या आत्म्याला अजून आज कसं बघायचंय की ती चमकती एकदम हिऱ्यासारखी। तर आपण आज जे बसलेलो इथं, किंवा आपल्याला कोणी आठवत असेल तर त्यांना आपण हिऱ्यांच्या रूपामध्ये एक दोन 5 सेकंद तरी आपण बघायचे, त्यांना हिऱ्यासारखं भ्रुकुटीमध्ये विराजमान, खूप चमक आहे।
तर हे असंच आपल्याला बघायचं. जेव्हा केव्हा कोणाचं शरीर आठवेल किंवा कोणी समोर आपल्या, सगळ्यात पहिले तर त्याला हिरा म्हणून बघायचं. आजपासून खूप चमक आहे त्याच्यामध्ये. बाबा म्हणता भले ही नंबरवार चमक है, हर एक की चमक अलग अलग है, लेकिन तुम्हें हर एक को जो देखना है वो आत्मा हीरा है, उस रूप में देखना है. तिथं मध्ये विराजमान आहे, या शरीरामुळे झाकला गेलेला आहे, पण तो ओरिजिनल आत्मा आहे. या शरीराला चालवणारा माझं ज्याच्याशी पार्ट आहे तो हिरा आहे, शरीर नाही. तो मनाना अर्थात बनना. तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा. डायमंड जुबली वर्ष होतं, 60 वर्ष पूर्ण होत होते यज्ञाला, आणि त्यानिमित्ताने बाबा आलेले. वर्षाचा शेवटचा दिवस पण आहे, 31 डिसेंबर 95 ची मुरली आहे. तर बाबा म्हणतात अभी सारा साल डायमंड बनेंगे या फिर थोड़ा थोड़ा डाग लगेगा. आता जसं महत्व कशाचं आहे, हिऱ्यामध्ये पण बिना डागवाले हिऱ्याचं महत्व आहे, त्याचीच किंमत असते. डाग असेल हिऱ्याला तर त्याला किंमत नाहीये. तो हमें बेदाग हिरा बनना है. कोणत्याही प्रकारचा विकारांचा, व्यर्थचा डाग आता आपल्यावरती आपल्याला ठेवायचा नाही. चमक आपली सतत वाढत राहिली पाहिजे. डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे. हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे. बाबा म्हणते मला तुमच्याकडून ही अपेक्षा आहे. आता आप किसी को भी देखो तो वो चमकता हुआ हीरा ही तुम्हें दिखाई देना चाहिए. तो कोण आहे ओरिजिनल, त्याला त्याच रूपामध्ये बघा. आणि बाबा जसं आपल्याला हिऱ्याच्या रूपामध्ये बघतो, खूप चमकदार, तसं आपण दुसऱ्यांना पण बघायचं. कोणी का असत नाही, कोणालाही आपण बघतोय तो बाबा म्हणता है उसे हीरे जैसा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए आपको बुद्धि के द्वारा. मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड. असं नाही की तो धुळीत पडलेला आहे, अशा हिशोबाने नका बघू. वो चमक रहा है, बस त्याची ती चमक बघा. म्हणजे आपली दृष्टी, वृत्ती, त्याच्याविषयी भावना सगळं बदलून जाईल. तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए. दूसऱ्यांना डायमंड बनणारे स्वतः डायमंड बनले. बाबा म्हणतात तुम अपने आप को भी उस स्थिति में रखो कि मैं भी चमकता हुआ हीरा हूं. क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी. आज संकल्प करो. बाबा म्हणतात डायमंड बनेंगे भी और डायमंड ही देखेंगे दूसरों को. उसकी पद, पोजीशन, पैसा, धर्म, जाति, हमारा रिश्ता, उस हिसाब से उसको नहीं देखना है. उसको देखना है वो चमकता हुआ हीरा है. मैं भी चमकता हुआ हीरा, वो भी चमकता हुआ हीरा. बस या हिऱ्याच्या रूपामध्ये सगळं बदलून जाईल आपलं वागणं, बोलणं त्याच्याशी. चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुनी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे, कोयला देखेंगे या डायमंड. बाबा म्हणता फिर मैं अभी कह रहा हूं कि हीरे जैसा देखो, लेकिन तुम्हारे सामने तो वो बातें है, इसमें तो क्या क्या अवगुण भरे पड़े हैं. ये तो कैसी तमोप्रधान आत्मा है, किती विकारी आत्मा है, किती व्यर्थ भरलेलं आहे याच्यामध्ये. बाबा म्हणता वो काला कोयला भी रहने दो, कितना भी तमोप्रधान है, कितना भी तमोगुण है उसके अंदर, लेकिन उसको भी तुम हीरे जैसा देखो. क्योंकि ओरिजिनल जब परमधाम में था और परमधाम से नीचे आया था, ये कालिक उस पर नहीं थी, विकारों की और व्यर्थ की. यहाँ आने के बाद चार्जिंग जैसे जैसे खत्म हुई, वैसे वैसे वो वैसा बनता गया. तो बाबा म्हणता है आज भले ही उसका कौन सा भी रूप तुम्हारे सामने है, तुमको पता है उसके बारे में, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करता है, पण त्या रूपामध्ये त्याला बिल्कुल बघू नका. बाबा म्हणता है उसको देखो कि ये तो बहुत सुंदर चमकता हुआ हीरा है, मेरे बाबा का बच्चा है. क्या होगा, बाबा म्हणता है अच्छा डायमंड देखेंगे, अच्छा तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा. बाबा म्हणता है आपको बहुत इच्छा है वो बदल जाए,
बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन वो ऐसे नहीं बदलेगा की त्याला तुम्ही तसंच बघत राहा, त्याच्यामध्ये एवढे दोष आहे, तो असा आहे, तो असा आहे, तो असा आहे, तो वो ऐसे नहीं बदलेगा. वो बदलेगा कब? जब आप स्वयं हीरे जैसी स्थिति में रहोगे, हीरे बन जाओगे, देहभान खत्म हो जाएगा और उसको हीरे के रूप में देखोगे, उसको सामने चमकता हुआ हीरा देखोगे. तो बाबा म्हणतात तुमची दृष्टी त्याच्यावर तशा प्रकारची पडल्यामुळे, तुमचे तसे व्हायब्रेशन गेल्यामुळे तो पण बदलून जाईल, त्याची पण चमक वाढत जाईल, त्याच्यामध्ये जो काळपण आलेलं आहे विकारांचं आणि व्यर्थचं, ते पण बाबा म्हणताय वो कम होता जाएगा आपकी ऐसी दृष्टी पडने से, ऐसी भावना रखने से. कारण ते व्हायब्रेशन पोहोचतात आत्म्यापर्यंत, आपण जे काही विचार करतोय. डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना. अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है. अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, डायमंड बनकर उनको डायमंड रूप में ही देखना है. जितनों के भी संपर्क में आओ, ती आपण व्यवहारामध्ये सावधानी ठेवतो ती वेगळी गोष्ट झाली, पण त्याचं ओरिजिनल जे रूप आहे ते ओरिजिनल ती आत्मा हिऱ्यासारखी चमकते हे बघायचंय. मग आपण जे नियम मर्यादाप्रमाणे चालायचं ती गोष्ट सगळी वेगळी आहे, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है वही देखना है. ओरिजिनल हीरे जैसी चमकती हुई आत्मा है. तो बाबा की श्रीमत का हम आज से हम पक्का कर लेते हैं और हम ऐसे ही इस तरीके से ही हमारी दृष्टि हो जाएगी आज के बाद. ये हमें आज संकल्प लेना है. आज सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि आपण हा संकल्प घ्यायचा आहे की मला आता सगळ्या कोणालाही आता दोषपूर्ण भावनेतून नाही बघायचंय. सावधानी वेगळा विषय असतो आणि सावधानी ठेवायची, परख शक्ती ठेवायची, पारखूनच आपल्याला निर्णय घ्यायचाय. कोणालाही कोणाच्या संगतीमध्ये राहायचंय, कोणाच्या संगतीमध्ये नाही राहायचंय, कोणापासून किती दूर राहायचंय, कोणाच्या किती कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचंय, सावधानी किती ठेवायची आहे, हे सगळं बघायचंय आपल्याला. ते तर कलियुगामध्ये आवश्यक आहे, पण भावना त्या व्यक्तीला बघताना आपली भावना बिलकुल चुकीची नाही पाहिजे. ओरिजिनल त्याचं स्वरूपच आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे की ये तो मेरे बाबा का बच्चा है. तो बाबा म्हणता इस तरीके से अब तुम्हें चलना है. यहां से आगे अमृत वेले से तो रात में सोने तक तुम्हारी वही स्थिति होनी चाहिए. उसी दृष्टि से हर एक को देखना है. डायमंड बनकर डायमंड को देखना है, हीरा बनकर सामने हीरे को ही देखना है. ही मस्तक मनीपेक्षा पण खूप चांगली आपण याचा अनुभव करू शकतो. मस्तक मनी, बाबा म्हणते मनी देखो, मस्तक में चमकता हुआ मनी देखो. तर त्याच्यापेक्षा हीरा जर आपण बघायला लागलो तर अजून जास्त पॉवरफुल होऊन जाईल ते. तो बाबा आज हमें समझा रहा है कि अभी हीरे जैसा देखना चालू करो. ये मनी के आगे की बात है. तुम भी हीरे, वो भी हीरा. ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई. फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं. इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है. तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे. बाबा प्रोग्राम ठेवतात, 1 दिवस 2 दिवस ठेवतात, इकडे राहील तिकडे राहील, 8 दिवस 15 दिवस प्रोग्राम ठेवतात. तर ते तो तुमचा प्रोग्राम कोणता आहे ते तर करायचंय. बाबा म्हणतात जे सेवेसाठी करणं आवश्यक आहे ते करा, पण तुमचं रोजचा प्रोग्राम काय. बाबांनी 4थ्या वेळेस सांगितलं, एकाच पानावरती 4थ्या वेळेस तीच गोष्ट सांगितली की अभी क्या करना है, डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनना, ये रोज का प्रोग्राम है. हमें डायमंड बनकर म्हणजे ते ज्ञान गुण शक्ती आपल्यामध्ये व्यवस्थित आणायचे, सगळ्या बाबांशी कनेक्शन ठेवून चमकदार हिऱ्यासारखं बनायचंय आणि दुसरं कसंही असो तर त्याला त्या स्थितीमध्ये बघायचंय, ओरिजिनल स्थितीमध्ये. तो ये हमारा रोज का प्रोग्राम है. हा सगळ्यात मोठा प्रोग्राम बाबा आपल्याला देतोय. बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, सेवा करनी है, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू का है. इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो या श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है. कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना. डायमंड के बिना और कुछ नहीं. बाबा म्हणतात हिऱ्यासारखं बनायचं म्हणजे हिऱ्यासारखंच बनायचं और उसमें कोई दाग भी नहीं लगना चाहिए, कोई व्यर्थ का विकार का.
अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लगा दिया, दाग लग गया. किसी भी विघ्नामध्ये परेशान झालो आपण. स्वभाव संस्कारामुळे काहीतरी गडबड झाली बोलण्यात, वागण्यात, विचार करण्यामध्ये, तो बाबा म्हणते ये दाग लग गया. जैसे बाबा है, जैसे ब्रह्मा बाबा है, जैसे शिव बाबा है, वैसा हमें बन जाना है. बिल्कुल काही थोडंसं गडबड व्हायला लागली, तुरंत स्टॉप करायचं, ताबडतोब ब्रेक लावायचा कि नहीं ऐसा नहीं, बाबा ने नहीं बोला ऐसा, ये दाग लग रहा है मेरे पर, तुरंत सावधान व्हायचं. विघ्न तो आने चाहिए ना. विघ्न विनाशक टाइटल है, तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे. अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं, तो कोई मानेगा नहीं. तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े. ये हो सकता है. बाबा म्हणता है की कोई विजयी तो काय म्हणतो, मी विजयी आहे आणि माझ्याकडे दुश्मन नाही आला पाहिजे. मग तो विजयी कशावरून, कसं ठरवायचं तो विजयी आहे. तो बाबा म्हणता है अभी तुम्हें माया जीत बनना है, माया जीत से जगत जीत बनेंगे, विघ्नों पर विजय पाने वाले बनना है. इसलिए तुम्हारा विघ्न विनाशक ये टाइटल है. विघ्न विनाशक म्हणून आपली भक्ती, आराधना, पूजा केली जाते. का? कारण तुमच्यामध्ये विघ्नांना समाप्त करण्याची ताकद आहे, विघ्नांचा विनाश करण्याची ताकद आहे, आणि म्हणून तुमची इतकी महिमा गायली जाते आजपर्यंत. म्हणून भक्तीमध्ये त्यांना हा प्रोग्राम मिळालेला आहे. त्यांचं मन रमतं त्याच्यामध्ये. क्यों? क्योंकि हमने विघ्न विनाश किए है संगम पर. काहीतरी तर पाहिजे त्यांना करमणूक करण्यासाठी, थोडंसं मनाला स्थिर शांत ठेवण्यासाठी. तो इस तरीके के अलग अलग उपाय वो करते हैं. लेकिन किस आधार पर करते हैं? हमने जो किया है उसी आधार पर करते हैं. तो बाबा म्हणता है विघ्नों को आने दो, परीक्षाएं होने दो, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े. म्हणता तुम्ही खूप शक्तिशाली आहे आणि सर्वशक्तिवान परमात्मा तुमच्या सोबत आहे. येऊ द्या परीक्षा, येऊ द्या विघ्न, पण तुमच्यामध्ये ती ताकद आहे की तुम्ही त्याच्यामध्ये विजयी होऊन जाणार आहे, आणि त्यामध्ये आपली शक्ती पण वाढत असते. तो यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है. जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है. बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं. आता पुढचा टप्पा बाबा म्हणते हैं सभी को बाबा भी चलता फिरता हीरे बन जाएंगे, तो फरिश्ता स्थिति ऑटोमेटिक हो जाएगी हमारी. चलता फिरता फरिश्ता बाबा म्हणता है मैं देखना चाहता हूं. आणि अजून दूसरी गोष्ट बाबा सांगता है, कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है. तो कई कहते हैं आत्मा को देखने की कोशिश करते, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी, तर शरीराकडेच नजर जाते. आणि त्याचा उपाय बाबांनी सांगितला की छोटी बिंदी मत देखो, हिरे जैसा देखो चमकता हुआ. तो उपाय आहेच की हिरा तर मोठा दिसेल आपल्याला. आपल्याला हे बघायचं की शरीराला नाही बघायचं आपल्याला. मग आपण एखाद्याला मग त्याला सूर्यासारखं पण बघू शकतो, खूप मोठा असं, किंवा खूप मोठा लाईट लावलेला आहे, बल्ब लावलेला आहे 200 मध्ये, असंही बघू शकतो आपण. शरीराचं भानच काढायचं आहे. तो हम कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन बाबा मतलब छोटी बिंदी देखने में नहीं आती, तो ऐसे उपाय कर सकते हैं हम अलग. और आज का बहुत सुंदर उपाय है की हिरे जैसा देखना है. सगळी दृष्टी वृत्तीच बदलून जाईल त्याच्याविषयीची, आपल्या विषयीची पण, की मैं हीरा हूं, चमकता हुआ हीरा. पण तरी ते पण शक्य नाही. बाबा म्हणते तसं मधून मधून तुम्हाला काय होतंय, शरीराला बघण्याची सवय, तर काय करा. तो बाबा म्हणता है कि तो बापदादा कहते चलो बिंदी खिसक जाती है लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना. फरिश्ता माना लाईट का आकार. तर बाबा म्हणताय मग फरिश्ता रूपामध्ये बघा, हे पूर्ण शरीरच बघा, पण कसं बघा, हाड मास नाहीये त्याच्यामध्ये. हाडा मासाच्या शरीरामुळे मग ते जे देहाचं आकर्षण निर्माण होत असतं. तर बाबा म्हणताय की फरिश्ता रूप मध्ये जसं लाईटच लाईट आहे. आणि कसं मग नुसतं लाईट कसं बघणार, नुसतं लाईटच चाललेला आहे, लाईटच येतोय जातोय नाही, आपल्याला डोळे दिसणार आहे, तो चेहरा दिसणार आहे, तर तो सगळं असं बघायचं की लाईट आहे बस,
डोळे आहे पण बिलकुल लाईट सारखे चमकतायत, असे लाईट लागलेले, लाईट फुल लाईट आहे, पॉवरफुल लाईट आहे, एकदम चमकताय, डोळे चमकताय, तो पूर्ण चेहरा चमकतोय, हाथ चमकता है, पाय चमकता है। बाबा म्हणते अगर शरीर दिखाई देता है, शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है, आत्मा में उतना बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, तो फरिश्ता रूप देखो। लाइट का शरीर दिखाई देना चाहिए, हाडा मांसाचं शरीर नका बघू मग। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसे नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। तुम्हाला शरीरच बघायचंय, नाहीच बुद्धीमध्ये येत नाहीये की ये आत्मा लाइट है, हीरा है चमकता हुआ, तो बाबा म्हणते शरीर को ही देखो लाइट के रूप में, खूप मोठा लाइट आहे, त्या हिशोबाने शरीराला बघा, सगळं लाइट लाइट आहे असं बघा, तर देहामधून बुद्धी निघून जाईल, जे हाडामासाच्या देहामध्ये बुद्धी आहे ती निघून जाईल। आता आपण परत थोडं काही सेकंद आपण अभ्यास करू। आपल्याला आपण शांत झाल्यावर ज्याचं शरीर आठवेल आपल्याला सगळ्यात पहिले, त्याला बिलकुल फरिश्ता रूपामध्ये बघायचं, चमकता फरिश्ता। तर असं कोणाच्या शरीरामध्ये बुद्धी जायला लागली की त्याला आपण लाईटच्या शरीरामध्ये बघायचं। आणि त्याच्यामध्ये अजून आपण एक करू शकतो की बाबा आहे वरती, त्याच्यावरती ज्याचं शरीर आहे त्याच्यावरती बाबा आहे फरिश्ता रूपामध्ये, आणि त्याची किरण ते शरीरावरती पडतात, मग अजून ते शरीर आपल्याला पॉवरफुल दिसेल, चमकतं। आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ब्रह्मा बाबा से प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है, तो ऐसे ही बाबा मध्ये स्वतःलाही फरिश्ता बघा, फरिश्ता रूपामध्ये कर्म करा। देहाचं भान, हाडामासाच्या शरीराचं भान त्याच्यामध्ये नका राहू। बाबा म्हणताय कि अगर शरीर का भान है तो फरिश्ता शरीर देखो अपना भी, और उसी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो। आप अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो, तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो, तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? ब्रह्मा बाबांनी शिवबाबाचंच कार्य आहे, पण ब्रह्मा बाबा निमित्त होता, त्याने जे स्थापन केलं त्याला 60 वर्ष पूर्ण होत होते, त्या निमित्ताने बाबा आलेले। तो बाबा म्हणता है अभी क्या गिफ्ट दोगे, क्या उसको क्या दिया जाता है जिसकी जुबली मनाई जा रही है? कोणाचं तरी मनवताय तुम्ही, ब्रह्मा बाबांच्या कार्याची ही जुबली 60 वर्ष पूर्ण झालेले, तर क्या दिया जाता है? कोणीतरी उत्तर दिलं गिफ्ट, त्यांना काहीतरी भेट देऊ। तो बाबा म्हणतात तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई, काहीतरी गुलाबाचं फूल दिलं किंवा मग काहीतरी बुके दिला आणून, तो बाबा म्हणते ये क्या गिफ्ट हो गई, सिर्फ इतना ही देना है क्या? ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है। कशी देतो आपण कोणालाही सप्रेम भेट, असंच नाही द्यायचंय म्हणून, पण विचार करतो आपण की यांना काय पसंत आहे।
तर त्या हिशोबाने गिफ्ट सप्रेम भेट दिली जाते. देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा. तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है. बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप. ब्रह्मा बाबांना काय आवडतं, चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप. भेट द्यायची, सप्रेम भेट द्यायची, तर बाबा म्हणतात ये दो ब्रह्मा को. ब्रह्मा से प्यार है तो उसे तुम उस स्थिति में रहो, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में. तो फरिश्ता समान बन जाओ. फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा. जैसे विघ्नावरती विजय मिळवायचे, बाबा म्हणते आप शक्तिशाली बन जाओ. तो फरिश्ता रूप में अगर हम रहेंगे तो बाबा म्हणते इतकी शक्तिशाली व्हायब्रेशन तुमचे राहतील की कोणताही विघ्न प्रभावच टाकू शकणार नाही. मी चमकता हिरा, हे लाईटचं शरीर आणि याच्यातून खूप शक्तिशाली किरण निघतात. किती सुंदर, आपल्या स्वतःविषयीचं किती सुंदर दृश्य आहे की मुझसे बहुत पॉवरफुल किरणे निकल रही है आणि आसपास ती जमा झालेली माझ्या. कोणाचं कोणतंही निगेटिव्ह येईल माझ्यापर्यंत ते माझ्यावर प्रभावच टाकू शकणार नाही, कारण मी बाबांच्या शक्तिशाली छत्रछायेमध्ये. क्योंकि मुझसे कब निकल रहा है, जब मेरा बाबा से कनेक्शन है. तो भगवान मेरा साथी है, मैं चमकता हुआ हीरा हूं और लाईट के शरीर में हूं. तो इतकी पॉवरफुल अवस्था आपली होऊन जाईल, इतकी पॉवरफुल स्थिती होऊन जाईल, विघ्न भले येईल पण आपल्यावर प्रभाव नाही टाकू शकणार. आपण त्याच्यामध्ये परेशान नाही होणार आणि विजयी होऊन जाऊ. तर खूप सुंदर सुंदर उपाय बाबा सांगत असतो आपल्याला. फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा. आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब लाइट, सब डबल लाइट हो जाएंगे. तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो. तर उत्तर दिलं तिथं सगळ्यांनी हाँ जी. तो बाबा म्हणताय देखना आपका टेप भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग होती है. बाबा म्हणता है कि आप सबने हाँ बोला है कि बाबा को, हम ब्रह्मा बाबा को ये गिफ्ट देंगे कि हम फरिश्ता स्थिती में रहेंगे अभी आज से. आपल्याला बिलकुल असं हलकं हलकं वाटायला लागेल जेव्हा आपण त्या स्थितीमध्ये राहतोय. खूप हलकं वाटेल. संकल्प करायचा आहे की मला आज स्वतःला हिरा बघायचंय, दुसऱ्यांना हिरा बघायचंय. मला आज फरिश्ता स्थितीमध्ये आजपासून राहायला सुरुवात करायची, दुसऱ्यालाही बघायचं, शरीर नाही बघायचं, तो फरिश्ता असं बघायचं. खूप सुंदर अनुभव यायला लागतील आपल्याला जीवनामध्ये. अच्छी बात है, गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे. तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा. ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो. ये दोन्ही अभ्यास बाबा म्हणताय अच्छी तरह से करते रहो. अमृत वेले उठते स्मृती में लाओ मैं कौन. उठल्याबरोबर बाबा म्हणताय स्मृतीमध्ये आणा मी कोण. मी कौन, फरिश्ता हूं. मैं कौन हूं, फरिश्ता हूं. और फरिश्ता हूं सिर्फ लाइट का शरीर नहीं रहेगा. भ्रुकुटी में चमकता हुआ हीरा भी उस लाइट के शरीर में है. संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो या लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ. 50% हुआ, 60% हुआ. तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे, क्या होगा. डबल फॉरेनर्स बोलो परसेंटेज होगी, हाँ या ना. थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे, शक्तियों में परसेंटेज होगी. हाँ उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं. डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा. तो बाबा अभी फुल परसेंटेज में पास होना है की आम्हाला या स्थितीमध्ये राहायचं, हिऱ्यासारखं राहायचंय, फरिश्ता रूपामध्ये राहायचंय. तो इसमें अगर पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा क्या करेगा पता है. उत्तर दिलं तिथं कोणी, शाबाश देंगे. ब्रह्मा बाबा अगर हम इस स्थिति में रहने लग जाए तो ब्रह्मा बाबा शाबाश देंगे. तो बाबा म्हणता है बस सिर्फ शाबाश दे देगा, बस शाबासकी देऊन टाकल, त्याच्यात तुमचं समाधान होऊन जाईल का, तेवढंच. त्याच्यापेक्षा अजून काही देईल बाबा. ब्रह्मा बाबा क्या देगा और क्या करेगा. रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा. रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा. भगवान हमें अपनी बाहों में ले लेगा. ब्रह्मा बाबा तो अकेला नहीं रहता है, कभी भी वो अकेला नहीं है. शिव परमात्मा के साथ वो कनेक्शन में है, कंटिन्यू कनेक्टेड है उसके साथ. ते दोघं सोबत है. तो ब्रह्मा बाबा अपनी बाहों में समा लेगा म्हणजे बाहे ब्रह्मा को, इसलिए बाबा कह रहा है. शिव बाबा की बाहें नहीं है, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता शरीर है उसके पास, इसलिए वो बाहों में समा लेगा. म्हणजे तो अनुभव आपल्याला येईल की बाबांनी आपल्याला
गोदीमध्ये घेतलेलं आहे, कड्यावरती घेतलेलं आहे, गळा भेट होती आपली त्याच्याशी, आणि तो अनुभव आपल्याला करायचा आहे बिलकुल उठल्याबरोबर कि ब्रह्मा बाबा मुझे बाहों में समा ले रहे हो, ब्रह्मा बाबा के साथ में शिव बाबा बैठा ही है, भगवान मुझे बाहों में समा ले रहा. तर मग कोणाची हिम्मत आहे मला परेशान करण्याची, किंवा मी परेशान कसा होऊ शकतो आता दिवसभरामध्ये. मेरी स्थिति बहुत उच्च रहेगी, भगवान मुझे बाहों में भर रहा है. तो और वो बाबा मतलब वो एक्चुअल में वैसे करेगा ब्रह्मा बाबा. अगर आप डायमंड रूप में रहना चालू कर दो, अगर आप फरिश्ता रूप में रहो, उठते ही भगवान आपको अपनी बाहों में ले लेगा. आणि त्याच्या इतकं सुरक्षित स्थान कोणतं आहे मग या दुनियेमध्ये. आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं. उससे बड़ा सुख तो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं कोई अपेक्षा रहेगी नहीं. इतना सुंदर सुख प्राप्त होगा कि जैसे ब्रह्मा बाबांनी गोदीमध्ये घेतलेलं आहे, गळा भेट होती है. फिर बाबा म्हणते अतिंद्रिय सुख का अनुभव होगा, आणि त्याच्या समोर ये दुनियेचे सगळे सुख फिक्के. एक बार सवेरे वो अनुभव कर लेना है हमें 5 मिनट कि बस मैं बाबा की बाहों में हूं, भगवान की बाहों में हूं, बस. तर दिवसभर कोणाकडून कशाची अपेक्षा नाही राहणार. तो बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी, म्हणजे गळ्यामध्ये बाबा म्हणते गळा भेट होईल. ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी. और सारा दिन क्या मिलेगा, संपूर्ण दिवसभर काय भेटेल मग अमृत वेलेला. बाबांच्या आपण गोदीमध्ये गळा भेट होतीये, आणि दिवसभर काय मग त्याचा परिणाम. जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सांप छत्र छाया बन गया. उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात. तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया, तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे. करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं. बाबा मी बंडल नहीं मारत, ऐसे नहीं कह देता हूं कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा. बाबा म्हणताय ये करके देखो, अनुभव करा तुम्ही. जर सकाळी तुम्ही एकतर स्टेप बाय स्टेप आपण विचार करायचा. बाबांनी पहिले सांगितलं की हिऱ्यासारखं बना, समोरच्याला हिरा बघा. फरिश्तासारखं त्या स्थितीमध्ये राहा, दुसऱ्यांना शरीर नका बघू, फरिश्ता रूपामध्ये त्याला बघा. सकाळी उठल्यानंतर अनुभव करा कि मैं फरिश्ता हूं और ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने मुझे बाहों में भर लिया है. हे जर सकाळी केलं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा. और फिर दिन भर बाबा म्हणते कोई भी विघ्न आ जाए, वो जैसा श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि वो तूफान आया, पानी आया, और फिर वो छत्र छाया बन गया, उसके ऊपर सांप छत्र छाया बन गया. तो बाबा म्हणता है ये रूहानी बात है. आपके ऊपर कितने भी विघ्न आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा छत्र छाया बनकर तुम्हारे साथ में रहेगा. तो कोई विघ्न की क्या ताकत है हमारे सामने ठहरने की. लेकिन हमारी स्थिति, हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध होनी चाहिए, तब बाबा हमें साथ देगा. जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हात उठाओ. ज्या दादी तिथं बसलेल्या होत्या, ज्या 60 वर्षापासून ज्ञानामध्ये तिथं आलेल्या सुरुवातीवाल्या ज्या होत्या, तो बाबा म्हणते हाथ उठाओ. अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं. आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की, तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ. 14 वर्ष कितीतरी विघ्न आले. 1937 पासून 1950 पर्यंत अनेक प्रकारचे विघ्न आले. बाबा त्यांच्याशी बोलताय. आपको कुछ हुआ, त्यांच्याशी बोलताय म्हणजे आपण पण तो विचार करायचा. आता बाबा ने कैसे उनको और इतने बड़े बड़े विघ्न थे, बाबा ने कैसे उनको संभाल कर रखा. तो बाबा अभी वो महाविनाश का समय सामने है. बाबा ने जैसे उनको संभाल कर रखा, वैसे हमको भी संभाल कर रखने वाला है. सिर्फ हमारा निश्चय उतना पक्का चाहिए, और जो बाबा हमें समझाता है मुरली में, उसको हमें करना है प्रैक्टिकल में. तो बाबा त्यांना सांगताय, तो बाप दादा छत्र छाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई. सारी दुनिया, नेताए, गुरु लोग सब एंटी हो गए, सगळे विरोधात गेले. सुरुवात जी झाली, खूप खूप भयानक त्रास सहन करावा लागला यांना. सगळे जे आज आपण बघतोय की आपले पंतप्रधान आपल्या बाजूने, राष्ट्रपती आपली आहे, कोण सगळ्या देशांचे, सगळ्या जे
इतर देशांमध्ये पण आपला प्रभाव आहे. इथल्या राज्याचे मुख्यमंत्री, सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल सगळे ब्रह्मकुमारीजमध्ये यायला लागलेले आहे. सगळ्यांना आवडायला लागलेलं आहे, सगळ्यांना आपलं महत्व कळायला लागलेलं आहे. पण पहिले बाबामध्ये सविरोध में मोठे मोठे महामंडलेश्वर येतात आणि ते महिमा करतात आपली. लेकिन उस समय, स्थापना के समय हे सगळे विरोधामध्ये गेले होते, कारण त्यांना हे सगळं नवीन होतं. भगवान का ज्ञान उनके सामने नहीं था, उनके सामने मनुष्य का ज्ञान था. तो वो लेकिन एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही, प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना. एक जण तर डायरेक्ट बंदूक घेऊन आला होता, गोळी मारायचा उशीर होता फक्त. वो सिख होता एक, गोळी मारायचा उशीर होता, तलवार घेऊन आला होता. पण त्याला ब्रह्मा बाबांच्या समोर गेल्यानंतर गुरु नानकचा साक्षात्कार झाला. तो इसका मतलब क्या, बाबा छत्रछाया बन गया उस समय. नहीं तो किती वेळ लागणार होता संपवायसाठी. लेकिन बाबा ने छत्रछाया बनकर सबको संभाल कर रखा. ब्रह्मा बाबा सहित सभी दादियों सहित सबको संभाला. कोणाला कोणत्याही प्रकारचं असा त्रास बाबांनी होऊ दिला नाही. भलेही बाहेरून इतके संकट आले, विघ्न आले, पण बाबांनी सगळ्यांना सांभाळून ठेवलं. कोई नुकसान हुआ, जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना. तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया. जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो. तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी. 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे. तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे. तर बाबा म्हणते त्यावेळेला ज्यावेळेला फाळणी झाली त्यावेळेला हे सगळे, तर त्याच्यामध्ये मुस्लिम तर कोणी नव्हतं. आपले जे 350 भाई बहिणी होते सगळे जवळपास जास्त करून सिंधी होते, हे हिंदू धर्माला मानणारे होते समजा त्याच्यामध्ये. आणि जे 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 काही मुस्लिम नव्हते ते सगळे पाकिस्तानमधून इकडे पळून आले. तर त्याच्यापैकी जे सिंधी लोक ब्रह्माबाबांच्या विरोधात होते ते पण इकडे पळून आले. पण पळून आले तर मग पहिले त्यांनी शिव्या दिलेल्या यांना सगळ्यांना, खूप त्रास दिलेला. पण जेव्हा इकडे यायचं होतं, पाकिस्तान सोडून इकडे यायचं होतं, ते ज्या ज्या चांगले चांगले वस्तू होत्या सगळं कुठे घेऊन येणार, परिस्थितीच नव्हती घेऊन येण्याची. तर इकडे यांचं बाहेर टेनिस कोर्ट होतं, जे ब्रह्माबाबा सगळ्यांच्या सोबत टेनिस खेळायचे तिथं. तर तिथं सगळे ठेवून जायचे की ये आप यूज करो. बाबा म्हणायचे की हमको नहीं चाहिए. तो भर गया, वो सारा मैदान भर गया उन चीजों से, तो वो देकर गए. तो बाबाने म्हणजे इतकासा सुद्धा त्रास झाला नाही. जे विरोधात होते ते सुद्धा बाबांना सगळं काही वस्तू देऊन गेले तिथं. और बाबा म्हणताय की वो सारे दुख में थे, इतनी तकलीफ थी, रक्ताच्या नद्या वाहिल्या ते तो एक वर्षभर फाळणी झाली त्यावेळेला. और आपको 5 रुपए में सब्जी की गाडी मिल जाती थी. म्हणजे कशाची कमी नहीं झाली त्यावेळेला आणि सगळे सुरक्षित पण राहिले. तो ऐसे ही हालत अभी होने वाली है दुनिया में. लेकिन जितने हम बाबा से कनेक्टेड बच्चे हैं, जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, जो बाबा पर निश्चय बुद्धि है, बाबा उनको ऐसे ही संभालेगा. बाबा म्हणते ते उदाहरण मी दाखवून दिलेलं आहे, मी कसं सांभाळू शकतो आपल्या बच्चांना. तो सिर्फ हमें उसका हाथ पकड़ कर रखना है. प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्रछाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया. तो जब इन्हों को अनुभव, नहीं तर मग अशी परिस्थिती होती की ते 350 लोक काय होते, असे संपून गेले असते. लेकिन ये कार्य परमपिता परमात्मा का, आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं. इतकी भयानक संकट आली आणि अशी घनघोर परिस्थिती आली त्यांच्यावरती. हे 350 यांचं हे मोडून काढणं काहीच विषयच नव्हता, बिल्कुल सहज शक्य होतं कोणाला पण. लेकिन भगवान की शक्ति थी, इसलिए वो कार्य चलता ही रहा, बढ़ता गया. और आज हम देख रहे हैं उसका प्रभाव क्या है. इसलिए बाबा म्हणता है वो मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ में रहो. तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते. तो बाबा म्हणते त्यांना मग सगळे अनुभव का नहीं करू शकत. मैंने उनको ये अनुभव कराया है, देखा है सबने प्रैक्टिकल में. जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती. चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे,
लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। बाबा म्हणते अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दृढ़ निश्चय रखो सिर्फ बाबा पे, अपने आप पे, ड्रामा पे और ईश्वरीय परिवार पे विश्वास पक्का रखना है हमें। तो बाबा म्हणते हैं क्या होगा, चाहे 5 तत्व कितना भी सामना करे, किती वादळ येऊ द्या, किती भूकंप येऊ द्या, किती पाऊस येऊ द्या, काही येऊ द्या, कितना भी कुछ हो जाए और कोई आत्मा कितना भी बड़ा विघ्न संकट लेकर आए, लेकिन बाबा संभाल लेगा हमें, सिर्फ निश्चय पक्का। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। ब्रह्मा बाबा कधीच डगमगले नहीं। तो ऐसे हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है की हमारी विजय निश्चित है। तर ती तेवढी स्थिरता येऊन जाईल आपल्यामध्ये, आणि स्थिरता आली तर कशाचाही सामना आपण करू शकतो। आपण हलचल मध्ये आलो, गडबडलो तर मग सामना करना मुश्किल हो जाए। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी है जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। तो बाबा म्हणते चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो। आज 14 लाख है, उस समय 4 लाख बच्चे होंगे बाबा के, जो पक्के बच्चे हैं। तो बाबा म्हणते इतने बच्चे हैं मेरी भुजाओं में समा सकते हैं। इतक्या मोठ्या त्या भुजा आहे बाबांच्या। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो, कुछ भी हो। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। कशाची भीती वाटली छोट्या मुलाला किंवा काही झालं तर तो सगळ्यात पहिले आई वडील तिथं असतील तर त्यांच्याकडे जातो। कोणी असेल तर त्याला थोडासा कोणी त्रास देणारा आलं, त्याला वाटलं याच्याकडून त्रास है, तो वो सबसे पहले जाएगा माँ बाप के पास, अपने जो भी उसे सामने दिखेगा उनके पास चला जाएगा, उनकी बाहों में समा जाएगा। त्याला माहिती आहे सगळ्यात सुरक्षित आहे आपल्यासाठी। आता यांच्याकडे आपण तर आपल्याला कोणी काही करू नहीं शकणार, इतनी गारंटी रहती है वो बच्चे को। तो ऐसे बाबा म्हणता है, ऐसे होता है ना, तो आप भी ऐसे करो। हमारा माता पिता, हमारा माँ बाप है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा म्हणते कोई संकट, विघ्न, परिस्थिति, कोई तकलीफ देने वाला आ जाए, कोई बीमारी है, कुछ भी है, कुछ भी है, चाहे कितना भी बड़ा प्रकृति के 5 तत्व तूफान लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, तुम भी वो छोटे बच्चे जैसा करो। माँ बाप की बाहों में समा जाओ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बाहों में समा जाओ, त्यांच्या गोदीमध्ये चालले जा, त्यांच्या कडेवरती बसा। बिलकुल ते आपण चित्र बघायचं, आत्ताही आपण बघितलं असेल तसं आपण करायचंय। बिलकुल बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो, बाबा बच्चे हो ना कि बड़े हो, अपने आप को बड़े तो नहीं समझते। हम सब बाबा के बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। बड़े समझेंगे तो अहंकार आ जाएगा। 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। बाबा बोलते शरीर तुम्हारा 100 साल का है, लेकिन आत्मा तो सेम है। तो बाप के आगे तो छोटे बच्चे ही हो, और हमें भी छोटा बच्चा बनकर ही रहना है, उसमें ही हमारी सेफ्टी है। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना। काही झालं, किती भीती वाटायला लागली, कसं काही त्रास व्हायला लागला, बाबा म्हणतात ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। आणि बाबा ने पहले सांगितलं, बाबा ऐसे नहीं कहता है, बंडलबाज नहीं हमारा बाबा। सिर्फ वो विश्वास होना चाहिए, वो निश्चय होना चाहिए, मन बुद्धीने तसं बघायचंय। आणि संशयाचा एक संकल्प सुद्धा नाही आला बाबाची मदत भेटेल का नाही भेटणार, हा संशय जरी आला, बाबांची मदत भेटणार नहीं म्हणजे भेटणारच नहीं। लेकिन बाबा ने मुझे संभालने की जिम्मेदारी ली है, बाबा जिम्मेवार है, और कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूं, ड्रामा में जो कुछ भी है, लेकिन बाबा मुझे संभाल लेगा। ये जो भावना है, इस भावना से हम सभी संकटों से पार हो जाएंगे और स्थिति बहुत अच्छी रखेंगे, हमारी शक्तियां जागृत हो जाएगी और उस स्थिति में हम सेवा कर सकेंगे सबकी। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले, सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले, माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे
संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।